हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ उमेर और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो है हमारा हाउ टू फाइंड द कोर कॉम्पिटेंसीज टू स्टार्ट अ बिजनेस विद। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बात की 5 स्टेप्स के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे कौन से 5 स्टेप्स है जो आपको लेने चाहिए, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि हमें हमारी कॉम्पिटिस को जानना होगा और उसको डेवलप करना होगा। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड दोज कोर कॉम्पिटेंसीज विद इन आवरसेल्व्स। So let's get started. Myself Oumer, founder of Ambition Learning, a business strategist, and I'll take you on a journey to find your core competencies through this video. So make sure you watch till end and ज़्यादा से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Okay, so let's begin. The first question जो आपको पूछना है अपने आप से, जब आप ये सोचोगे कि मेरी competencies क्या हो सकती है, the first question is what you are good at. Now this is the beginning. Let's say कि कोई एक चीज जो आपको अच्छे से आती ही नहीं है, क्या आप उसमें कॉम्पिटेंट अपने आप को बोल सकते हो? Let's say I don't know how to speak in public. So can I say that public speaking is my competency? No, right? So for you to be competent in something, you should be good at it first. So ask yourself this one question. What are the things I am good at? And आपको एक लिस्ट मिलेगी। शायद मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, शायद मैं लेट्स से फेसबुक एड्स चलाने में अच्छा हूँ, शायद मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, शायद मैं स्टोरी टेलिंग में अच्छा हूँ, शायद मैं सेलिंग में अच्छा हूँ, शायद मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा हूँ। XYZ, एनीथिंग विच यू नो हाउ टू डू और यू आर गुड एट। देन कम्स what do you like doing? Out of the list of the things which you are good at, you then identify the things which you truly like doing. Let's say for example, I love public speaking and I am good at it. So it overlaps. I like public speaking and also when I speak, people really listen. I can engage them. So I'm good at it as well. So you need to ask yourself, first, what am I good at? And second, out of these things, what are the things which I like doing and I can keep on doing over and over and over again? It can be anything. The third question, which is very important to ask yourself, is what are the things for which the market will pay me? What are the things जिससे मैं लोगों से पैसा कमा सकता हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद भी है, जिनमें मैं अच्छा भी हूँ और उनसे मैं कोई एक गैप फिलअप कर सकता हूँ मार्केट का, जिसके लिए लोग मुझे पैसे देंगे। For that, people will pay me. When you find a sweet spot between all of these 3 things, which is first, what you like, second, what you are good at, and third, for which market will pay you, then you find a spot in between which can be your core competency as a business. Now let's take a case study. And case study is of me. So when I was 16, I was new to this field of business consulting and business coaching. I remember when I was 16 years old, I coached my first business, which was a salon business. And I was able to deliver a good sort of results to that salon within the 6 month of the program or 6 month of the consulting. वो वक्त था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, it was a 50% of unlock. 2020 में हमने स्टार्ट किया था कोविड में, एंड द बिजनेस वॉज इन अ टोटल लॉसेस एंड जो एनवायरमेंट भी था वो भी सही नहीं था, क्योंकि सैलून ये एक सर्विस बिजनेस है, एक ऑफलाइन बिजनेस है। हम इसको कोविड एरा में रन कैसे करेंगे? बट स्टिल बाय आवर मार्केटिंग कैंपेन्स, बाय आवर सेलिंग स्ट्रैटेजीज, बाय आवर एक्सपीरियंस, what we can say, by our strategies of increasing customers value experience in the salon, we were able to retain the trust, we were able to establish the trust in customers mind and get recurring customers, recurring orders, and जिससे जो salon कभी losses में चल रहा था, it started hitting 6 figures in revenue on a month basis, like per month it started hitting 6 figures. ये result मिल पाया। और इसकी starting कहाँ से हुई? So first of all, I was really good at talking to people. I was really good at public speaking. Then it came that I have a curiosity about business. So if I learn business, can I teach people? So answer was yes. If I learn business and I started teaching people, then maybe मैं ये सिखा सकता हूँ और मैं अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ जो मुझे आता है या फिर जो मुझे पता है।
तो जब मैंने बिजनेस सीखा और जब मैंने मेरे एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी जो थी कम्युनिकेशन, उसके साथ इसको कंबाइन किया, देन मुझे एक स्कोप मिला, दैट इज इफ आई गो आउट इन मार्केट and I meet business owners who wants to grow their business and who are looking for consultants who can work with them, not just teach them but actually work with them, then can people pay me? Answer was yes. So when I started doing this, it has been almost 2 years now. I was very fortunate enough to have people from almost every industry as my client, from service to product. We deal with jewelry businesses, we deal with service businesses like gym, transport, logistic, even trainers and coaches. All came into my touch, came into our clientele, and we were able to work with them and understand their business more deeply and deliver their results. So just how I did it, you can do it also. बस करना क्या है, तो 3 सवाल अपने आप को पूछना है। मैं किस में अच्छा हूँ, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या मैं चीज़ें बार बार कर सकता हूँ, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए मार्केट मुझे पैसा देगी। एंड जब ये 3 चीज़ें आ गई, खुद से ये भी सवाल पूछो कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है, इससे मैं गैप क्या फिल करूँ। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको मार्केट पैसा नहीं देने वाला। सो व्हेन यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन प्लेस, यू आर गोइंग टू फाइंड योर कोर कॉम्पिटेंसी, यू आर गोइंग टू फाइंड अ आइडिया, यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग जिसके अराउंड आप आपका बिजनेस बिल्ड कर सको। Okay, so I hope this video was a valuable one for you. To watch more of this, make sure you kindly subscribe and hit the bell icon. And I'll see you in next video.